All right, so let me share the whiteboard with you. Okay, I'm going to write the questions on the whiteboard and you have to guess which part of the of the sentence is incorrect. आपको मतलब incorrect part को select करना है, correct नहीं incorrect part को, ठीक है? जिस part में आपका problem होगा, जिस part में आपको दिक्कत होगी सॉल्व करने में, उस पार्ट को आपको लगेगा कि इसमें कुछ एरर है, वो एरर वाला पार्ट आपको फाइंड आउट करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. Are you able to see the screen, each and every person? If there is an issue regarding that, you can ask me, okay? First of all, these questions are very much important for you to discuss because ये questions ना सिर्फ आपको competition में help करेंगे, बल्कि इस तरह के जो questions हैं आपके, इस तरह के questions आपको आते हैं when you go ahead in the examination for any of the selection procedure in a company. जब आपका selection procedure start होता है, उस दौरान आपके कुछ questions जो होते हैं, that is the questions that are asked during your examination, that is your एप्टीट्यूड टेस्ट के दौरान जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उसमें स्पॉट द एरर का क्वेश्चन हमेशा रहेगा. नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ कंपनी यू आर अप्लाइंग फॉर, व्हाट टाइप ऑफ प्रोफाइल यू आर अप्लाइंग फॉर, व्हाट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन यू आर गोइंग टू डू, वेदर इट इज प्राइवेट और वेदर इट इज गवर्नमेंट सेक्टर, किसी भी सेक्टर में कहीं भी आप अप्लाई कर रहे हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट आपका कंपलसरी होता है. और इस एप्टीट्यूड टेस्ट में हमेशा एक इंग्लिश सेक्शन रहता है, जिसमें दो चीजें आपको कंपलसरी मिलेंगी. one of which is your comprehension passage. Maybe it is only small of 5 or 6 lines passage, or maybe it is a huge passage of at least 200 to 250 words, but आपको पैसेज हमेशा मिलेगा, चाहे छोटा मिले चाहे बड़ा मिले. और दूसरा क्वेश्चन होता है आपका स्पॉट द एरर का क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में, इंग्लिश का आप कोई भी सेक्शन है आपके एग्जाम में एप्टीट्यूड टेस्ट में, वो बिना स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चन के कंप्लीट नहीं हो सकता है. You will always have this kind of question with you. Okay, so this is your first question. I'm reading the sentence. If you have any doubt, you can ask me. Well, the sentence is, one of the members expressed doubt if the minister was an atheist. ये पूरा स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं है, नीदर इट इज एनी स्टेटमेंट, ये टोकन भी नहीं है, ये पार्ट्स में डिवाइडेड भी नहीं है. आपको बस इतना बताना है कि इस सेंटेंस में क्या ग्रामेटिकल एरर है. ओके, think about the answer and I want all of you to be participative. पैसिव नहीं रहना है, बैठे नहीं रहना है क्लास में, पार्टिसिपेट आपको करते रहना है. आंसर द क्वेश्चन that you think will be the answer for the error of this sentence. कौन सी पार्ट में आपको एरर दिख रहा है? Ma'am, this would have to raise hand. You can raise your hand or you can write it in the chat box which part that you think will be changed for the correction Okay, part. Okay, ma'am. I'm giving you 5 minutes. 5 minutes is too much. Let's take 2 minutes. 2 minutes for solving this question. Read the sentence because we have not done anything related to the grammar. That's why I'm not solve it at the moment. You can solve as per your question. You can solve it any way. All right, I have one answer. Anybody else who would like to give any other answer?
have one more minute. Think about the statement, think about the aspects, break it down into different parts. Okay. कोई भी बड़ा सेंटेंस है, कितना भी छोटा है, कितना भी बड़ा है, उसको पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिए. Then you will easily get to know which answer is correct and which where you can find the incorrect part. Alright, let me tell you the answer since 2 minutes have already been gone by. One of the members expressed doubt if the minister was an atheist. Now the thing is, if का मतलब ही होता है कि आप कंडीशन रख रहे हैं, if this happened, then you can do this. If this not happened, you will not get this. ये कंडीशनल ऑलरेडी बता रहा है. तो जब आप डाउट लिख रहे हैं कि उसने अपना डाउट एक्सप्रेस किया, तो वहां पर आपको if लगाने की जरूरत नहीं है, because you are already expressing that you have a doubt and you want to ask about the doubt. This is the straight statement which comes from a doubt inside your mind and you are not forming any question. आप question नहीं form कर रहे हैं. अगर आप question form कर रहे होते तो आप if लिखते question में, जहां पर आप doubt को use नहीं करते statement में. But since it is used as a single statement and you are already using doubt, so instead of if, you will have to write something else. Now what we can include is, we have two sections of the part, that is one of the member expressed doubt and second part is the minister was an atheist. Now the doubt पोर्शन, जो पहले वाला पोर्शन है आपका सेंटेंस का, उसे हमें सेकंड सेंटेंस के साथ कनेक्ट करना है. सो वन ऑफ द कनेक्टिंग वर्ड दैट हैज अ सिंपल इफेक्ट, जिससे आप सिर्फ सेंटेंसेस कनेक्ट करते हैं, वो या तो आपका कॉमा हो सकता है या फिर आपका दैट हो सकता है. दीज टू आर यूज्ड टू कनेक्ट सेंटेंसेस where we do not want to convey any different meaning from the both of the part. जब हम sentences के दो part में आपस में अलग अलग मीनिंग कन्वे नहीं करना चाहते हैं या कुछ डिफरेंट नहीं बोलना चाहते हैं, सेम कंटिन्यूएशन पार्ट चल रहा है, तो उस केस में या तो हम कॉमास का यूज करते हैं या फिर हम दैट का यूज करते हैं. दैट मीन्स इफ यहाँ पर जो है उसकी जगह यहाँ पर कोई और वर्ड लगना चाहिए था. दिस इज इनकरेक्ट. ठीक है, ये हमारा इनकरेक्ट. इफ के जगह यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट जो है वो ये हो जाएगा. करेक्ट स्टेटमेंट वुड बी वन ऑफ द members expressed doubt that the minister was an atheist. Okay. Now, if you don't know, let me explain you. Atheist का मतलब होता है the one who is not, who does not preaches any God. ठीक है, जिसको गॉड में विश्वास नहीं रखता है उसे हम atheist कहते हैं. ठीक है. Now, let me give you another question, and I want most of you to be participating. I have written that in chat box. That is correct, ma'am? Yes, yes, I have gotten your answer, Vashi. That's what I'm telling. I want all of the other students also to write the answer. Okay. All right. The next question would be your. Actually, let me write it in different colors so that you know what is the question, what is the answer. Okay, this is your second question. I could not put up in a hotel because the boarding and lodging charges were exorbitant.
Exorbitant means it was too much higher than the normal rating of the for the other hotels. Okay, all right. If you have anything that you don't understand in the question, you can ask me. If you know the answer, that is the error in the statement, you can go ahead and write out in the chat box. Think about the answer, think about the statement that it is trying to convey. What is the meaning that is we are trying to convey? Okay, I've got an answer. One more minute I'm giving you. Whatever answer you feel is correct, let me know as soon as possible. Anybody else who would like to answer? Then at should be used instead of in because it's a smaller place. Sorry. All right. So if we look at the sentence, let's divide it into three parts. Okay. I could not put up in a hotel. This is one part. Second part that we will take is because the boarding and lodging charges were exorbitant. Now, exorbitant तक जो आपका sentence है because वो आपका reason है and because यहाँ पर reason किस चीज के लिए दिया गया है, the effect that has been shown is I could not put up in a hotel. यहाँ पर put up in a hotel, put up का जो phrase का मीनिंग होता है, पुट अप का मतलब ये होता है व्हेन यू आर बेसिकली गोइंग टू आप किसी को जब बर्दाश्त कर रहे होते हो, ठीक है, इट इज लाइक इफ यू आर गोइंग टू से समथिंग गुड अबाउट दैट पर्सन, सॉरी गुड अबाउट समथिंग, तो उसको आप दिल से अच्छा नहीं बोल रहे हो, उसको आप मन से अच्छा नहीं बोल रहे हो, यू आर जस्ट you're just tolerating that condition, ठीक है, इसीलिए आप put up वाला phrase यूज करते हैं, ठीक है. It I could not put up in a hotel. Now put up in a hotel that means आप hotel का जो चार्जेस है या उसका जो भी बिहेवियर है आपके तरफ वो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, ये आप इस फ्रेज में बताना पड़ रहा है आपको. तो इन अ होटल नहीं होता है आपका, इन अ सिटी होता है, इन अ टाउन होता है, at a hotel होता है, at a restaurant. You went to a restaurant, so at the restaurant the dessert was great. Yeah, you went to a temple, ठीक है, and at the temple you saw beautiful garden of roses. तो ये जो आपका places होते हैं which are in the smaller sections, there you will use at instead of in. In आप use करते हैं जब एक bigger section of area के बारे में हम बात कर रहे होते हैं. So the wrong thing that is present here is in. in यहाँ पर present नहीं होना चाहिए, आपका correct sentence जो होगा वो at होगा. I could not put up at a hotel because the boarding and lodging charges
were extravagant. Now, let me give you another question, and if you are not able to answer, do not find it depressing or do not find it discouraging. बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है इन सारी चीजों में. From the starting, it is not possible for you to answer all the question. Let me give you a simpler one. Okay, this is first of all a question, and in this question, whatever you think is wrong in this question, in the statement, you can go ahead and answer that. Which dress is the best of the two that I have shown you? That means the meaning that is trying to convey, you understand meaning आपको समझ में आ रहा होगा. आपने किसी को दो ड्रेसेस दिखाई हैं, उनमें से कौन सा आपको बेटर लगा ये पूछने के लिए ये स्टेटमेंट यूज हो रहा है. Now, whichever you find is the wrong, does have an error in this part, you can go ahead and ask me. Okay, I have got an answer. Anybody else who would like to answer? Ma'am, it is something easier. All of I actually let others answer also. I have to take class of 8 students instead of 1. Yes, Prerna, Megha, and Sachin, Divya, anybody else who would like to answer, at least try to answer the questions, okay? It is not necessary that you are answering the correct or wrong answer. Just try to answer whichever comes to your mind. I'm giving you 1 minute. Read the statement correctly and find the answer. Let me know in the chat box. If you don't understand anything, raise your hand and ask the question. Alright, so the answer to this question would be, first of all, यहाँ पर again जो मैंने आपको meaning बताया, इसका meaning समझिए कि क्या meaning convey किया जा रहा है. In this question, it has been asked, two dresses are shown to you, and which one is better, that has to be asked here. Now, आपके पास दो options हैं, दो choices हैं, जिनमें से एक आपको choose करना है. So whenever you are choosing from two of the options, आपके पास जैसे multiple choice में अगर आपके पास सिर्फ true या false ही रहेगा आंसर करने के लिए और कोई तीसरा option available नहीं है, that means what, you have two options and you have to choose either it is false, either it is true. दोनों में से यही दो options में से एक correct होगा. तो जब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं और आपस में उन दोनों ऑप्शंस को आप कंपेयर कर रहे होते हैं, which one is better और which one is something much more higher quality, in that case आप superlative नहीं comparative degree का use करते हैं. So here, if two dresses are shown to you, that means you would have to find the better of the two dresses, not the best of the
trudeces, ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ट नहीं, आपका बेटर यूज होगा। अंडरस्टूड? If you are not able to understand anything, just you can go ahead and ask me, okay? All right. So let me write down the correct statement for this one. So the correct question to be asked here is, which dress is the better of the two that I have shown you? ये आपका करेक्ट क्वेश्चन रहेगा टू आस्क whenever you are asking about two of the options and one of them you have to choose. Now here one more thing it is important, अगर आप नाउन के रूल्स पढ़ ही रहे हैं, सॉरी आप कंपैरेटिव डिग्री के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो और एक चीज याद रखिए कि कंपैरेटिव डिग्री के भी आगे अगर आर्टिकल द लगा है, इसका मतलब क्या होता है कि आप सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। दो ऑप्शंस में से आप एक चूज कर रहे हैं। उस केस में मान लीजिए आपके पास दो चीजें हैं और उनकी क्वालिटी को आप कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव टू फोन्स एंड यू हैव टू फोन ए या फोन बी में से कौन सा बेहतर है, ये मुझे बताना है। दैट फोन ए इज बेटर देन फोन बी। सिर्फ जब मैं ये बता रही हूँ, ठीक है, मैं कंपेयर कर रही हूँ, लेकिन उसको मैं कंपेयर करने बोल नहीं रही हूँ, ठीक है, मैं अपना कंक्लूजन आपको बता रही हूँ। बट जब मैं आपको कंपेयर करने के लिए बोलूँ कि विच वन इज द बेटर वन, विच वन इज द फास्टर वन, विच वन इज द स्लोअर वन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपको कह रही हूँ कि आपको कंपैरिजन करना है। एंड इस कंपैरिजन का मतलब होता है कि आपको दोनों में से एक सिलेक्ट करना है। दैट मीन्स इफ आई एम सेइंग दैट फोन ए इज बेटर वन देन फोन बी, यानी कि मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने कंपेयर नहीं किया, सिर्फ मैंने सिलेक्ट किया। उस केस में मैं आर्टिकल द का यूज कर सकती हूँ। we may use, it is not necessary to use, but we may use while we are comparing and selecting one of the two items being compared. Understood? All right, let me write down another question. And again, if you have any doubt regarding any of those things, you can write down the questions also if you feel like it will help you. Okay. And please avoid the capital letters. Okay, I'm not writing the capital letters in the front of the sentences. Okay, let me just correct it. I have not taken care of in the prior sentences. वो भी एक तरह का grammatical error है, ठीक है। If you are ignoring that the proper nouns or the first word in the sentence should be in the capital letter. Okay, this is your second sentence. Sorry, this is your third sentence that you have to find out whether it is whether it contains an error or not. I need to get to the house in Lansdowne Road by 10 o'clock. That means Lansdowne Road एक रोड है जहाँ पर एक हाउस है और उस हाउस में इन्हें 10 बजे तक पहुंचना है। जो हमारे स्पीकर हैं या राइटर हैं, उन्हें 10 बजे इस हाउस में पहुंचना है। Anyhow. All right, I have one answer. Anybody else who would like to answer? Again, if you are not able to get the answer, if you don't understand what is correct, what is incorrect, break the sentences into different parts. Okay.
break the sentences into different parts. And one more thing, these activity or this activity specifically, spot the error, it might be conducted in oral format. That means the statements would be spoken to you once or twice, it might be repeated. It is not necessary that it will be repeated. Keep in mind that also. अगर oral में रहेगा ये activity spot the error का, हो सकता है कि आपको sentence दोबारा repeat नहीं करके बताया जाए या minimum सिर्फ 2 बार या 3 बार ही repeat किया जाए आपको ये sentences. So it is better that you put into your mind a format of these sentences. ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए सही है जिन्हें एटलीस्ट इतना पता है कि सेंटेंसेस किस तरह फॉर्म होते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू have to know the grammatical errors or grammatical aspects of each and every part of your grammar, but sentences अगर आपको फॉर्म करने आते हैं, that means at least half of the time you can spot the error in your sentence. Just look at the different aspect, break the sentences into different parts. If it is too much long, break it into 3. If it is this much long that I have already shown you, break it into 2 parts. Okay, if it helps, then you can break it more than 2 to 3 parts or 4 parts, 5 parts, whatever thing helps you. जितना छोटा आपको करने में आसानी लग रही है सॉल्व करने में, you can minimize the you can do that in the number of sections that you will be uploading. जितना sections आपको करना है sentence का, आपके सहूलियत के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा sections भी मत करिएगा. ऐसा नहीं 1 by 1 आप पूरा एक एक word करके evaluate कर रहे हैं, वो आपको और ज्यादा कंफ्यूज कर देगा. So it is better to at least minimum break the sentence into 2 to 3 parts or 4 parts if you are not comfortable, or if the sentence is very much long, break into few number of parts, and then you will get to know what errors you can find in the sentence. Okay. All right, so I'm giving you 1 minute only. If you are, I have 2 answers. Anybody who would like to contribute? See, answering right or answering wrong is not the prospect here. This is a practice session. You are just here to learn. ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है आप वो आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं. All right, if nobody else is going to answer, I have already 2 answers. So let me put it into structurization. Break it into 3 parts if you like. Okay, break it into 3 parts. First part we can do is I need to get to the house. Second, in Lampswood Road. Third, by 10 o'clock. These sections we can divide. Now, first of all, first section if we look about, I need to get to the house. मुझे घर तक जाना है. This is correct because there is no error here. In Lansdowne Road by 10 o'clock. By 10 o'clock is correct. इसमें error हो सकता है लगेगा आपको क्योंकि 10 o'clock time है. Time आप at 9 o'clock the examination will start. इस तरह का sentences के आप used to हैं. लेकिन टाइम के बारे में जब टाइम उस टाइम तक आपको ये काम कर देना है तो आप बाय लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल द रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड बाय 25th. ये टाइम ड्यूरेशन आपको एक काम करने के लिए दिया गया है और एंडिंग टाइम आपको बता दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इज
25th and by 9 o'clock on 25th you have to submit the form. ठीक है, फॉर्म आपको सबमिट कर देना रजिस्ट्रेशन के लिए। तो टाइमिंग पे जब एक प्रॉपर टाइमिंग पे सेट लगा दिया जाता है कि इतने टाइम तक आपको ये काम कंप्लीट कर लेना है, तब आप बाय यूज करते हैं उसके। नाउ द सेकंड क्वेश्चन वाज इन लैंडस्टोन रोड। अगेन जो यहाँ पर प्रॉब्लम थी वही सेम प्रॉब्लम यहाँ पर है। इन और होटल इसीलिए नहीं है क्योंकि होटल एक ऐसा बिल्डिंग है जहाँ पर आप जाते हैं, उस स्मॉल एरिया को जब आप कवर अप करते हैं तो एट अ होटल लिखते हैं ना। अगर आप कोई भी रोड का नाम ले रहे हैं तो उस पे आप इन क्यों नहीं लिखते हैं, इसका मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। अगर टेबल पे कोई गिलास रखा है तो इसका इंग्लिश हम क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, टेबल पे गिलास रखा है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, देयर इज अ ग्लास ऑफ वाटर और देयर इज अ ग्लास ऑफ मिल्क ऑन द टेबल। ऑलराइट, सेम वे अगर आपका घर मान लीजिए कि कोई एक रोड है, बैनर्जी रोड है, बैनर्जी रोड पे आपका घर है, तो वही बोलते हो हिंदी में ही कि बैनर्जी, मेरा घर बैनर्जी रोड पे है। ठीक है, सेम वे यहाँ पर इंग्लिश में जब उसको ट्रांसलेट करेंगे, सो द हाउस इज ऑन द लैम्पस्टन रोड। जब आप स्पेसिफिकली किसी रोड का नाम लिखते हैं तो रोड के नाम के साथ आप ऑन यूज करते हैं, ऑन प्रपोजिशन यूज करते हैं, बिकॉज इट डेजिग्नेट्स टू अ स्ट्रीट और सम एरिया जो एक पाथ है, उस पाथ के ऊपर ही, उसी पाथ पे आपका घर है। ठीक है, उस पाथ के बीचों बीच नहीं है, उस पाथ के एंड में नहीं है, उस पाथ के ऊपर ही आपका घर है। दैट इज व्हाई आप जब भी कोई स्ट्रीट का नाम या कोई रोड का नाम लिख रहे हैं तो आपको ऑन लिखना जरूरी है प्रपोजिशन में, और कोई प्रपोजिशन आप उसके आगे नहीं लगा सकते। ऑलराइट, नाउ अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो इन आपका बहुत बड़े बड़े एरियाज के लिए यूज होता है, सिटी, टाउन, कंट्री, इस तरीके के एरियाज के लिए आपका इन प्रपोजिशन यूज होता है। फॉर एग्जांपल, शी रिसाइड्स इन बिहार कैन बी यूज्ड। शी इज फ्रॉम इंडिया और शी रिसाइड्स इन इंडिया इज करेक्ट। ठीक है, इंडिया हो गया, बिहार हो गया, दुबई हो गया, ये बड़े बड़े क्रॉस सेक्शनल एरियाज हैं, और इन एरियाज को रेफर करने के लिए, लैंड एरियाज को रेफर करने के लिए आप उसके आगे इन लगाते हैं। अंडरस्टूड? सो द करेक्ट सेंटेंस फॉर दिस सेंटेंस विल बी, write down the correct sentence here. If you are having any doubt or if you are not able to understand any of the rules, क्योंकि ये सारे rules logical हैं बच्चे, ठीक है, तो अगर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पूछ लीजिए। लॉजिक समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या चीज यूज होता है, क्यों यूज होता है, then you will be able to solve any of the problems related to these or like these। ठीक है, ये आपका solution है इसका। ठीक है, now if we go on to the next portion, let me, one more question we can do I think in this class. Okay, this is your next statement, that is, David and me are like brothers but from different mothers. Okay, divided into different parts, जो अलग अलग सेक्टर्स यहाँ पर यूज हुए हैं, सेगमेंट्स यूज हुए हैं सेंटेंस के, दैट इज नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, या कुछ भी ऐसा है, उसको डाइसेक्ट करिए पहले। ठीक है, और डाइसेक्ट करने के बाद आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इट इज वेरी इजी फॉर दोज पीपल हु हैव प्रैक्टिस्ड। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है उनके लिए शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट होता है। सो इट इज बेटर फॉर यू टू एटलीस्ट participate in answering the question. गलत हो रहा है, that is all right.
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप ट्राई नहीं कर रहे हो उसमें बहुत प्रॉब्लम है। Giving you 1 minute, take your time, read the sentence, whatever answer you can come up with, you can answer. And again, same people are answering the same questions. All the rest of the students, please try to answer the question. Whether it is correct or incorrect, that is a different thing. Anyone else who would like to answer? Try to break down the sentences. जितने पार्ट में भी आप ब्रेक डाउन करना चाहते हैं उतने पार्ट में आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं. There is no limitation in breaking down the sentences or getting to the answer. आप जिस भी आंसर की तरफ, जिस भी प्रॉब्लम की तरफ सोचना चाहते हो वो सोच सकते हो. Only you have to verify each and every aspect. हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में दीजिए. आपका सेंटेंसेस किस किस पार्ट से बना है. नाउन है इसमें, प्रोनाउन है इसमें, आर्टिकल है इसमें, या कॉमन नाउन यूज हुआ है. ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है. ये सारी चीजें आपको जितना सोच पा रहे हो उतना सोचने की कोशिश करो. हर चीज सोचने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट मैक्सिमम जितना आप कर पा रहे हैं अपने से उतना आप कर सकते हैं. ठीक है. All right, let me tell you the answer for this. Again, we will divide it into 3 sections. David and me are, second part, like brothers, but third part, from different mothers. Now, if we look at from the back, from different mothers is not incorrect because technically आपका meaning जो convey करना चाह रहे हैं ये इसी तरह convey होगा कि डेविड और मैं भाई जैसे हैं दूसरी माँ से. ठीक है, अलग अलग माँ से हम मिले हैं, लेकिन we are like brothers. We are like brothers is correct sentence if we replace David and me with we. अगर हम we के साथ इसे replace करते हैं तो we are like brothers but from different mothers. That means the whole sentence here is grammatically correct. आप पढ़ के खुद देखिए इस चीज को, आपको ये सही लगेगा. तो गलती कहाँ है? डेविड एंड मी में. डेविड और मी इसीलिए यहाँ पर गलती है. डेविड तो नाम है तो उसमें गलती हो नहीं सकती है बिकॉज नेम इज समथिंग दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल.
तो मी में गलती है। मी में क्या गलती है? मी आपका ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। दिस इज अ टाइप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट में, जब आप अपने आप को ऑब्जेक्ट की प्लेस में रखते हैं सेंटेंस में, जैसे he took me to the zoo, ठीक है, वो मुझे जू लेके गए, या वो मुझे जू लेके गया। तो मुझे लेके गया यानी कि मैं वहां पर ऑब्जेक्ट हूँ, मैं खुद से अपनी मर्जी से नहीं गई, या मैंने, ये आइडिया मेरा नहीं था, किसी और का आइडिया था, वो बस मुझे साथ लेके गए। दैट मीन्स आई एम द ऑब्जेक्ट हियर, आई एम नॉट द वन डूइंग द एक्शन ऑन देयर ओन। मैं, उनके एक्शन का एक रिएक्शन है मेरे साथ जाना, ठीक है, मेरा उनके साथ जाना एक रिएक्शन है। दैट मीन्स आई एम द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सो व्हेन आई एम द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, वहां पर मी लगाना सही है। लेकिन डेविड एंड आई को अगर हटा के हम यहाँ पर वी लगा रहे हैं, इसका मतलब वी इज व्हाट? वी इज योर सब्जेक्टिव। पर्सनल प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है प्लूरल के लिए, वो वी होता है। तो जब आप वहां पर सब्जेक्टिव लगा रहे हैं, तो डेविड और मी यानी कि एक प्रॉपर नाउन और एक ऑब्जेक्टिव प्रॉपर प्रोनाउन सही नहीं रहेगा। प्रॉपर नाउन के साथ आपका क्या लगना चाहिए? सब्जेक्टिव लगना चाहिए, क्योंकि आप इस सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं। सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी, David and I are like brothers, and but from different mothers. Now, if you actually want to have these kinds of sets to solve, you can get it from me. Also, I have some PDFs related to grammar. ग्रामर पोर्शन जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आता है, मेरे पास उसके पीडीएफ भी हैं। सो इफ यू नीड दैट, आई कैन सेंड इट इन योर ग्रुप एंड यू कैन रीड दैट। इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर एनी jobs, you will have to come across these type of questions। तो आप ये सारे questions कभी ना कभी बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एट द एंड मोमेंट अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो बर्डन थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। सो इट इज बेटर कि आप अभी से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करें, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। इससे क्या होता है कि ये ना सिर्फ स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चंस में आपको हेल्प करते हैं, बट आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी इस तरह के क्वेश्चन हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर डेविड एंड डैश लिखा होता, तो आपको पता रहता कि ऑप्शन में से कौन सा प्रॉपर नाउन आपको चूज करना है। अंडरस्टूड? So if you are going ahead with this section, you will have to realize that this is a very important part. आप अगर बाकी के भी जितने आपके competitions हैं, list है आपके पास ग्रुप में, you can look at the competitions and there are numerous number of competitions which have different uses for communication learning। communication को learn करने के लिए आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें अलग अलग जगह काम आएगी, और ये सारी कंपटीशन कोई भी इसमें से एक भी यूजलेस नहीं है, आपको कोई ना कोई एक स्किल सेट जरूर देगा। सो आई वुड प्रेफर फॉर यू टू प्रैक्टिस फॉर द कॉम्पिटिशन्स टू बी अपहोल्डेड। ऑल्सो नेक्स्ट क्लास से पहले, नेक्स्ट क्लास नहीं, नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोग मुझे यहाँ पर लिस्ट देंगे of number of students who are participating in different activities। जो मैंने आपको लास्ट क्लास भी कही थी प्रिपेयर करने के लिए, जो भी एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मेक अ लिस्ट with your name and badge and roll number and give it to me, or you can send it to me through WhatsApp, so that I know which activities are going to be more practical for you to practice in the classroom। और बाकी जो एक्टिविटीज हमारी बच जाएंगी, या जिन एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्किट कंपटीशन में आपके क्लास से कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इट इज समथिंग दैट वी कैन नॉट प्रैक्टिस इन द क्लासरूम, वी कैन ओनली वॉच इट और वी कैन ओनली लर्न इट फ्रॉम समवन एल्स, या उसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। एक प्रेजेंटेशन आप प्रिपेयर कर सकते हैं क्लास में, हम एक मंथ का आपका प्रेजेंटेशन रख सकते हैं, दैट वी कैन डू।
लेकिन अगर कुछ छोटी छोटी चीजों में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल स्पॉट द एरर हो गया, एक्सटेम्पोर हो गया, जैम सेशन हो गया, इन सब चीजों में अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है आपकी क्लास से, तो वो सारी चीजें हम लोग आराम से क्लास के करिकुलम में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज दोज आर one that are very useful in your communication, and two, these are very useful और very easy to practice in the classroom itself. Classroom में इसे practice करने में भी बहुत आसानी रहती है. I hope you learned something today, and if you are interested in spot the error things, आपको बहुत सारे websites मिल जाएंगे इस तरह के questions देने के लिए, या फिर books भी आती हैं. You can refer to those kind of books. और बीकॉम के बाद अगर कोई फर्दर आप स्टडी करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, तो आपको कैट मैट के एग्जाम के लिए भी ये सारी चीजें पढ़नी जरूरी है. सो इफ whatever feature you are going to decide, this spot the error or any grammatical competition that you are going to uphold in this communicative fest will be helpful in your further future. All right. Attendance I have taken, don't worry about that, and let's meet in the next class. Okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am.